Hello everyone. Happy morning my lovely students. How are you all? That's great students. You are enjoying your mathematics video as well as you are completing your notebooks because you are sending me the photoshops. So students, let's come back to our chapter. This video will be our part 4 video of decimal numbers. In this video, we will be discussing our third exercise on page number 75 of your textbook. So students, exercise बहुत easy है. Addition और subtraction between decimals. हमें addition और subtraction बहुत अच्छे से आता है. बस अब ये ध्यान रखना है कि डेसिमल के कारण क्या क्या चेंजेस आएंगे. सो आर माय स्टूडेंट्स रेडी विद देयर पेन एंड नोटबुक? सो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल लर्न हाउ टू ऐड द डेसिमल नंबर्स. आपको एक दो चीजों की ध्यान रखना बहुत जरूरत है. दैट हाउ डेसिमल्स आएंगे. ऑलवेज रिमेंबर, पॉइंट के नीचे पॉइंट आना कंपल्सरी in the case of addition as well as subtraction. So students, we have to focus on the points कि एक पॉइंट के नीचे अगला पॉइंट आना ही चाहिए. जैसे हम ऐड करते हैं हम वैसे ही ऐड करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, सी 8 + 5 13, 1 3, 2 + 1 3, 6, 8 15, 4 + 1 5. So this will be my first answer. So students, let's move to the second sum. जैसे आपके पेजेस होते हैं ना, वैसे मेरा भी पेज खत्म हो गया है. So let's take this colorful page. So in this we will solve the B1 of students. Is this visible properly now? I am copying the question. Let me change the pen. 399.123. I am directly writing the answer. प्लस सी, पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए. एंड द क्वेश्चन इज 475. डेसिमल के पहले कौन कौन से नंबर्स है? 1 1 2. सो सिंपल, आई विल ऐड द टर्म. 5 + 3 8, 7 + 2 9, 4 + 1 5, 9 + 2 11 again, and 3 4 5. It's easy now students. So let's move to question number 2. So students, which subtraction sum you want to solve after question number 2? Let's solve 1. Now which color I should select? See, this is the light one, and we will have a clear image. So first of all, question number 2. Subtract. Let me select the dark color. So students, we will solve the A1. Always remember, in subtraction we will first write. See the first question, 9.999 from 99.9. from के बाद वाला हमेशा पहले आएगा. This is the basic rule. 99.9. अब as per the rules, पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा. अब आगे क्या है? 9.999. 0.999.
आगे सिर्फ एक 9 है तो आई विल राइट 0 9. अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? यहाँ पर कुछ नहीं है, आई विल प्लेस 0 over there. See, now I will do the cutting. I will start borrowing. This 9, let me use another color so you can have a clear image of this. This 9 will become 8. This will become 18. 18. 10 will become 9 and this will become 10. 10 minus 9, 9. 9 minus 9, 0. 18 minus 9, 9. Point. 18 minus 9 and 8. Okay students, let's solve one another sum. One more sum of this category. We will be taking now F1. It seems to be different. I will simply write the solution. See, read the question. 72.45 from 100. पहले तो मैं 100 लिखूंगी क्योंकि वो फ्रॉम के बाद है. अब मेरे पास तो कोई पॉइंट ही नहीं है इन 100, so I will place point here and 0 0. Now again I will write minus. What is the deduction? 72.45. So now I will deduct it. See, this 10, let me use the another pen for solution. This 10 will become 9. 0 will, यहाँ पे 10 का 9 हो जाएगा, ये भी 10 का 9 और ये 10 हो जाएगा. अब मैं सिंपल डिडक्शन कर दूंगी जैसे मैं करती हूँ. 5, 5, 7 and 2. So this is my answer. So I hope अब मेरे स्टूडेंट्स को अच्छे से समझ आ गया होगा कि हम कैसे डेसिमल्स में हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं. And your question number 3 is, do you want we should solve question number 3 one sum? Let's solve it, my lovely students. Simplify. Question number 3 is simplify. Let's solve the A1. मेरा क्वेश्चन है 3.9 minus 3.6 plus 2.4 plus 1.7. This is exactly my question. First of all, I will consider this 2. So I will write 3.9 minus 3.6. Now I will deduct it. So what will be my answer? 9 minus 6, 3.0. अब ये आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा 0.3. Now I will add this term 2.4. And if you wish, you can add this term also. But when it comes to subtraction, you have to do. आप दो नंबर एक साथ ले सकते हो अगर सबट्रैक्शन है तो. अगर एडिशन है तो तीनों नंबर को एक साथ ले सकते हैं. लेट्स कीप इट नॉर्मल, जो है वैसे ही करेंगे. 4 plus, remember the signature. 4 plus 3, 7. 0 plus 2, 2. Now this 2.7 will be carried forward at 1.7. 7 plus 7, 14. 2, 3, 4. So students, see, this is so easy. For your understanding, I have used two different color pens. Black for the question and red for the answer. इन दोनों का जो आंसर आया वो यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड हो गया. इन दोनों का जो आंसर आया वो यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड हो गया. ओके,
Here is your worksheet, students. We have already covered sum number 1, 2 and 3. This sums are your homework. Okay students, I hope you are clear with addition and subtraction in decimal. So students, complete your notebook. Okay, bye students. Take care. God bless you.